ଛୋଟ ନିର୍ବାହ କେମିତି କିରେ ପଢିବା ସତ୍ୟଜିତ ସେଠି କିଏ ଆମ ପିଲା ଭାଇ ଆମ ପିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଛୁ ତ କଣ ଅଛି ରେକର୍ଡ ହଉଛୁ so morning class today we'll talk about how constituent assembly constitution came into force and the historical background behind it and as well as some of the salient features of our Indian constitution. Before we move to preamble in the next class of basic features of the constitution. So before our constitution came into place, constituent assembly was formed. How? In 1934, the idea of constitution or constituent assembly, was put forward by M.N. Roy. He was a pioneer of the communist movement in India. In 1935, Indian Congress, National Congress, first demanded a constituent assembly to frame the Constitution of India. Jawaharlal Nehru in 1938 declared that Constitution of Free India must be framed without outside interference by a constituent assembly elected based on adult franchise. 1940 रे तापरे the demand for constituent assembly was accepted by British in the August of 1940 रे इतला that we'll read in history. So I am avoiding the polity class. Stafford Cripps in 1942 came to India with a draft proposal to frame the independent constitution, which was rejected by the All India Muslim League because they wanted a two-nation theory or two separate constituent assembly. In 1946, the cabinet mission was sent to India, which rejected the two constituent assemblies, but elections were held as per the cabinet mission plan of 1946 to establish the constituent assembly. Single. So, this is how the elected members were selected. Total 389 members. You can see total 3. How are they divided? 389 to 296 members were from British India and 93 members were from princely states. 296 members were again further divided. 11 governor province through 292 members have got a member from each chief commissioner provinces. 1114 to 292. 292 ରୁ କେମିତି equal proportion of Muslims, Sikhs ଆଉ general ରୁ select ହେବେ ଆଉ ଏଠି ବି same representation of each community were elected by members of that community in the provincial legislative assembly. So 292 plus 4 ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର princely states. But roughly ଗୋଟେ million ରେ ଗୋଟେ ଲୋକ elect ହଉଥିଲେ. কিন্তু ইলেকশন সরলা পরে দ্যাট পরে পড়িবা তো এইটা হলা কনস্টিट्यूएंट असेंबली रो फॉर्मेशन प्रिंसली स्टेट्स इलेक्शन हेतिला एटा टोटल मेंबर इक्वल प्रोपोर्शन हला परे इलेक्शन हेतिला जुलाई टू अगस्त 1946 रे अराउंड 208 कांग्रेस रो आस्थिले 73 मुस्लिम लीग रो आस्थिले आ 15 टा इंडिपेंडेंट आस्थिले सेतबडे ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନଥିଲେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ସନରେ
जे नॉमिनेट करके ताकर प्रिंसिपल स्टेट रू गोटे 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 जो लोक पठेबे सेतिर से नॉमिनेट करे न तब जेहेतु मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट कलानी प्रथम जो सिटिंग हेतिला एते मेंबर्स आर आल्सो रिड्यूस्ड टू 70 प्रिंसिपल स्टेट रू कना तांको पाखरे किछि प्रिंसिपल स्टेट रो जागा थिला आ ब्रिटिश इंडिया रे रिड्यूस हेकी 296 रू 229 हे एटा हला हम कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन तापर जेतले मेंबर इलेक्ट हे गले तापर फर्स्ट सिटिंग हमर हितला 9 डिसेंबर 46 सेतबेले सचिदानंद नंद सिन्हा फर्स्ट सेतबेले हितले टेम्पोररी प्रेसिडेंट हितले तापर राजेंद्र प्रसाद हेले अब सीनियर मोस्ट member elected as per French practice हेले ad hoc or say time of till new president was elected सचिदानंद सिन्हा से फर्स्ट टाइम सेशन रो प्रेसिडेंट तापर 11 टेक 46 रे राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड दी जण हेले वाइस प्रेसिडेंट एचसी और हरेंद्र कुमार मुखर्जी एंड बीटी कृष्णमाचार्य वर इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट अब बीएन राव हेले कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर 13 टेक 46 रे अगेन जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द फेमस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एटा तमे बहु जदी पढुथबो लक्ष्मीकांत पूरा डिटेली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कोन फीचर रहइबो तादरे थिला in the assembly which laid down the philosophy of the constitution of India 22 Jan 47 re objective resolution was unanimously adopted by the assembly around 211 members attend karthile and it was accepted by the assembly then July 47 re Indian Independence Act was enacted May 49 re Constituent Assembly accepted and approved India's membership in the British Commonwealth 26 November 49 the Constituent Assembly passed and adopted the Constitution of India. Constituent Assembly 24 Jan 50 re Constituent Assembly elected Rajendra Prasad as the first President of India and adopted the national anthem and national song. Around Constituent Assembly ru final adoption vitare time neitila 2 years 2 years 11 months ଆଉ 18 days कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करिया ता भीतर से 11 टा सेशन करथिले और 11 टा सेशन हेतला फाइनल करिया को और से माने रेफर करिथिले अराउंड 60 कंट्रीज रो कॉन्स्टिट्यूशन और ड्राफ्ट रे हम कॉन्स्टिट्यूशन ता रहिला 114 दिन बिफोर फाइनली एक्सेप्टिंग टोटल पैसा खर्च होइतला हमर कॉन्स्टिट्यूशन करिया थिला 64 लाख ओडा किछि दरकार नै खाली जानिया पे हम कॉन्स्टिट्यूशन केमिति फ्रेम हेतिला कार किछि डाउट अछि एटा हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सतबेले जो एड्रेस करा होतला ता फोटो तापर हमें आसीबा salient features of the Indian constitution India constitution हला one of the largest or lengthiest कारण तार सेतबेले जेतबेले हेइतिला प्रिएम्बल सहित हमर 395 एटिक्स थिला जोटा 22 पार्ट्स रे डिवाइड हेचे 8 टा शेड्यूल थिला एट प्रेजेंट 448 टा अछि 25 पार्ट्स और 12 टा शेड्यूल किछि पार्ट्स किछि आर्टिकल ऐड हेछि किछि डिलीट हेछि किछि शेड्यूल भी ऐड हेछि डिलीट हेछि तो एट प्रेजेंट हमर स्टेट हला 448 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स और जेतले स्टार्ट हेतिला सेतले एतिकी थिला तो पचरा जे हमर व्हाई इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन द लेंथीएस्ट कारण ज्योग्राफिकल फैक्टर मैटर करे हमर सब डिफरेंट स्टेट डिफरेंट रो तांकर कल्चर रूल्स एंड रेगुलेशन अछि आम स्टेट ओडिसा रे जहा दरकार जे तो महाराष्ट्र रे से न तो सब जाक कंसीडरेशन को देई की हमर कॉन्स्टिट्यूशन हेतला ज्योग्राफिकल फैक्टर्स और सेकंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स हमर कॉन्स्टिट्यूशन जेतले हेतला 60 टा कंट्री इंस्पायर्ड हेतला बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रो सबुटो अधिका 250 प्रोविजंस हम कॉन्स्टिट्यूशन रो मोर और लेस आसीची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1950 35 सॉरी व्हिच वाज बल्कि और हमर स्टेट और सेंटर पे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन
जे ओडिशा रे गोटे रूल आ दिल्ली रे गोटे रूल हम पूरा सेटा तो नहीं गोटे कॉन्स्टिट्यूशन हार्ड है लीगल प्रोफेशन लोक बहुत अधिका थिले माने लॉयर्स बहुत अधिका थिले तो सेहित पे आउ टिके लंबा हैला प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस माने सेंटर स्टेट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियल रो पूरा प्रोविजंस गुडा को डिटेल एक्सप्लेन है सेहित पे सालिएंट फीचर्स रे हम देखबा जे हम कॉन्स्टिट्यूशन टा वन ऑफ द बिगेस्ट और लेंथीएस्ट एटा ला फीचर्स बरो एटा तमे थरे आखि पके दबो कोटा काउटो आस्तला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कोटा आस्तला ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो कोटा आस्तला बेसिकली आमे एइथुरु जदी समअप करिबा हमरो पॉलिटिकल जिनसोटा माने कॉन्स्टिट्यूशन रो फिलोसॉफिकल पार्ट टा आमे नेइछु प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एडी अछि स्ट्रक्चरल पार्ट टा आमे नेइछु गवर्नमेंट पार्ट गोटे कॉन्स्टिट्यूशन रो आमे नेइछु ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन माने पॉलिटिकल पार्ट माने कोन कैबिनेट रो कोन डिसीजंस रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव तो एउडा माने तीनटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट हो स्ट्रक्चरल पॉलिटिकल आउ फिलोसॉफिकल आउ हमरो ब्रिटिश थारु कोन डिफरेंट कि तांकर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमरो रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन तांकर रिटन हमरो यूएस रो अनरिटन आउ को कंट्री रो परिबो न्यूजीलैंड रो इजराइल रो पार्टली रिटन पार्टली अनरिटन बुझी होची तापर आसला एटा साइलेंट फीचर्स हमरो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी यूएस हमरो रिजिडिटी एइथ पाई जे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में तुम जदी किछि चेंज करिया को चाहिबो किछि प्रोविजन बहुत कष्ट बट ब्रिटिश पार्लियामेंट रे चेंज करिया जेहेतु अनरिटन सैंक्शन चेंज हे परिबो ना हमरो मिक्स ऑफ बोथ अछि नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल और आर्टिकल 368 अनुसार जोटा कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दिया हमको पॉलिटिशियन मान को अमेंड करिया को some provisions can be amended by a special majority of the parliament माने 2/3 majority of the members of each house present थिबे आ वोटिंग करिवे of the total members of each house माने गोटे राज्य सभा लोक सभा some other provisions can be amended by a special majority of the parliament with the ratification by half of the total states माने टोटल मेंबर प्रेजेंट आर्टिकल 368 अनुसार दरकार स्पेशल मेजॉरिटी प्रेजेंट थिबा वोट करिवे बाकी प्रोविजन गुडा करे सिंपल मेजॉरिटी रे चेंज हे परिबो जोटा आर्टिकल 368 अंडर रे आसे खाली एति की मने रखे हमर नाइदर रिजिड की फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल हैला ब्रिटिश रो रिजिड हैला यूएस रो हमर किंतु जोटा दरकार हम सेटा कॉन्स्टिट्यूशन रे चेंज करि परिबो बट अगेन सेटा जुडिशियल रिव्यू को भी जाई परिबो जोटा आगामी हम जुडिशियल क्लास रे विल स्टडी तापर गोटे फीचर हैला हमर फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस ता माने कोन जे हमर फेडरल सिस्टम सेंटर रे गोटे माने जेमती सेंटर रे मोदी को गवर्नमेंट अछि हम ओडिसा पॉइंट ऑफ व्यू एठी माझी को गवर्नमेंट अछि मोहन माझी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तार सब फीचर्स ऑफ फेडरेशन अछि दीटा गवर्नमेंट अछि सेंटर ता पाखरे पावर अछि आ स्टेट रो ता पाखरे पावर अछि हमर 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्स्टिट्यूशन अछि कॉन्स्टिट्यूशन का जदि किछि डाउट हो हमर जदि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड ऑफ लॉ माने जहार जदि कोनो से हमें दरकार पड़िबे जे को कोन रेफर करबा को लॉ कोन अछि हमर सब बेले कॉन्स्टिट्यूशन को प्राधान्यता दिया जाय इंडिपेंडेंट जुडिशियरी अछि किंतु हाउएवर द बहुत गुडे फीचर रे हमर यूनिटरी आ नॉन फेडरल स्ट्रक्चर भी अछि जेति हमर जहा कले भी एठी जहा लॉ हेले सेंटर जहा लॉ करबो सेटा फाइनल माने मोदी जी जदि एठी जदि रूल करिवे जे ना हमरो खाली टैक्स 15% हो किंतु मोदी बाबू कहले ऊपर जाईकी के नाही 5% हो ताले 5% टा प्रिविल कर सेंटर रो पावर स्टेट टू अधिक सेट पे से कहला यूनिटरी फीचर भी केते बडा अछि स्ट्रांग सेंटर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप आम कंट्री रे जति यूएस रे सब जाक स्टेट्स रा अलग अलग वीजा दरकार हमर जो लोक ओडिसा रे अछि ताको गोटे वीजा देबेनी इंडिया पे गोटे वीजा देबेनी महाराष्ट्र पे
जो जदि गोटे लोक ओडिशा रे सिटीजन से महाराष्ट्र रे भी रही परिबो गुजरात रे भी रही परिबो सबुठी रही परिबो किंतु यूएस रे से आनु ଆଉ ଆମର ଫେଡରେସନ ଯେମିତି ୟୁଏସ୍ ର ସେମିତି ନାହିଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଯୋଉଟା ଦିଟା ଜିନିଷ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ करे इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट्स बाय द स्टेट्स समस्त एग्रीमेंट हेकी गोटे कॉन्स्टिट्यूट करिकु इंडिया करि ना बाय डिफॉल्ट हमें हेचु नो स्टेट हैज द राइट टू सेपरेट फ्रॉम द फेडरेशन खाली ओडिशा किबा बेंगल बाहरी कहि परिबो कि गोटे सेपरेट कंट्री हम कॉन्स्टिट्यूशन ने सेटा क्लियरली लिखा जाय छै कार किछि डाउट होची तापर हमरो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमरो जेहेतु ब्रिटिश रो आसीची गोटा ला पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि हमें नॉमिनेट करू हम पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट से मेंबर्स को आउट है प्रेसिडेंशियल जोटा यूएस प्रेसिडेंट रे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रो सेपरेट पावर अछि किंतु हमर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रो रिलेशन अछि कोऑर्डिनेशन रे चले द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑपरेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंटरी और वेस्टर तांकर पार्लियामेंट अछि वेस्टर जगह रे तो वेस्टर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी हमें कहि परिबा रादर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम the constitution established the parliamentary system not only at the center but also in the state रे भी हमरो इलेक्शन हुए फीचर्स कोन प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट आसीबो से गवर्नमेंट रूल करिवो कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट रे एटा एटा सेपरेशन ऑफ पावर अछि न हमरो को रिलेशन रे काम करंती मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर सेंटर रे प्राइम मिनिस्टर और स्टेट रे चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप रे चले और ड्यूरेशन 5 वर्ष सरी गला पर डिसोल्यूशन हो जाए लोअर हाउस किबा लोकसभा किबा स्टेट रे असेंबली हमर बहुत उडे किंतु तांकर हम भितरे बेसिक डिफरेंस कोन सोवरेन बॉडी तांकर हेड मोनार्क सक्सेशन हेरिटेरी सक्सेशन रे तांकरी घर लोक हेड थांती किंतु हमर हेड जे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंट हो इनडायरेक्ट आमे जो मेंबर मान को अपॉइंट करछु किबा पार्लियामेंट रे अछंती किबा असेंबली रे अछंती एमएलए एमपी माने वोट करिकि हमर हेड को बाछन हमरो तापरे आसीबा फीचर्स रे सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी जुडिशियल सुप्रीमेसी यूएस नु थाए तांकर कोड जहा कहबो सेया किंतु पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी किबा पार्लियामेंट रो अधिकार पावर अछि ब्रिटिश रो किंतु हमें मिक्स्ड ऑफ बोथ नै ता माने जदि किछि हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे पास हैला जे कोन से लॉ सेटा कोर्ट को भी जाई परिबो जे तार इंटेंट कोड जुडिशियल रिव्यू रे हेई परिबो से पे लिखा छि द डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विथ द ब्रिटिश पार्लियामेंट while the principle of judicial supremacy is that of the American Supreme Court. American Constitution provides for the due process of law against the procedure established of law contained in the Indian Constitution, Article 21. एटा में fundamental right रे पढिबा बेसिकली हमरो ए अछि जेटा ग्रेजुअली चेंज हिची जे ओटा रूल हैला जदि काली जे किए भी जदि चोरी करिवो तार हाथ कटा हिची धरो एग्जांपल ताले गोटे 5 वर्षर छुआ जदि गोटे दुकान को कि काहाटू गोटे चॉकलेट चोरी कला ताले तार कोन तार हाथ कटा हबो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड ऑफ लॉ कहूची हां हाथ कटा हबो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किंतु कहबो इंटेंट देखा जीवो से छुआ तो ग्रेजुअली हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे एटा अछि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ किंतु एबे इंटेंट भी देखा होछ जो पनिशमेंट ता चोरी रे मिलिया कथा से छुआ को मिलिबनी से छुआ चॉकलेट खाया को चाहतला 5 वर्ष से ठीक भूल जानिनी सेटा इंप्लाई करे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सॉरी एटा ना हम कॉन्स्टिट्यूशन रे एटा अछि ग्रेजुअली हमर एबे कोर्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड ऑफ लॉ थाई कि भी किंतु इंटेंट देखुछन तो हमर सीट पे इसी लिखा है जे हमर प्रॉपर सिंथेसिस रहउची बिटवीन पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी से पे कहली जे जेकोन सी पार्लियामेंटरी लॉ हला यदि पास करा हबो सेटा पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कोर्ट सुनी परिबो जेमती एबे
पास करा होतला जो वुमेन मानक पई बिल धर सेटा पास हे थांता केतरा लोक कोर्ट को जाई थांते जाई पार थांते हां जाई परिबो कोर्ट भी सुनी परिबो जे हां दरकार की दरकार न और एटा आर्टिकल जो 368 अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन on the parliament can amend the major portion of the constitution through its constituent power but basic feature change hobani बुझी होची हमर इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इंटीग्रेटेड कोन तळ कोर्ट अछि लोअर कोर्ट डिफरेंट प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल ता ऊपर हाई कोर्ट ता ऊपर सुप्रीम कोर्ट एटा टोटल जाको इंटीग्रेटेड किंतु तांकर पावर अछि निज निज कोर्ट रे जहा जहा केस पड़िबो तार जजमेंट दबा लोक को जदी भलो न लागिला से माने ऊपर कोर्ट को रेफर करि परिबे आ फाइनली सुप्रीम कोर्ट जोटा कहबो सेटा फाइनल सेटा लिखा हिची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश ए जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड तीन जगह रिलेटेड अछति किंतु इंडिपेंडेंट Supreme Court stands at the top of the integrated judicial system in the country. Below there are high courts at the state level. Under a high court there are hierarchy of subordinate court that is district court, lower court, criminal court. The single system of courts enforces both the central laws as well as the state laws. State अनुसार किछि law हेतिबो लिस्ट अछि concurrent list, state list, central list एटा सब हम पढिबा आगु सेंटर पाखे किछि ओटे अछि जोटा किछि लॉ उडा अछि जोटा मिसी कि समान डिसाइड कर परिबे आ किछि उडा को स्टेट पाखे अछि तादरे पुनी डिफरेंशिएशन अछि यूनियन टेरिटरीज अलगा आउट सेपरेट स्टेट अलगा किंतु ओडिसा जहा लॉ करि परिबो दिल्ली से अनुसार करि परिबो दिल्ली रो पुलिस ता हाथ रे नाही सेंटर हाथ रे अछि किंतु ओडिसा रो पुलिस ओडिसा गवर्नमेंट माने चीफ मिनिस्टर पाखे अछि तो किछि लॉ जोटा आम स्टेट स्पेसिफिक धर आम स्टेट रे मद अलाउड अछि बिहार रे नाही तो मद पीले अरेस्ट हो तो से अनुसार कि ओटे केस करके रेफर कर परिबो तो किछि उडा स्टेट लॉ थाए जोटा फॉलो करा जाय आ किछि उडा सेंट्रल लॉ जोटा मैंडेटरी समस्त को फॉलो करिया को पड़िबो आम कॉन्स्टिट्यूशन रे जजेस को टेन्योर फिक्स्ड एज अछि सैलरी अछि किंतु यूएस रे सेमति किछि नाही तांकर जज मरिबो जेबे सेतोल ता टेन्योर खत्म हो तापले एटा फंडामेंटल राइट्स हम ओटा सेपरेट चैप्टर पढिबा फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एटा सब अछि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजंस एटा एबे खाली देखि देता राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या माने हला ए राइट गुडा जदी न मिलिला तमे कोर्ट को डायरेक्टली जाई परिबो ए आर्टिकल रे एटा हमें इंडिविजुअली पढिबा क्लास रे फंडामेंटल राइट्स चैप्टर कार किछि डाउट अछि एटा भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 रे अछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स रे एटा हला एनफोर्सेबल बाय लॉ माने तुमको बाध्य ए जिंस गुडा को सरकार को तुमको जो राइट दिया जायछि सिटीजन को फॉलो करिया माने तांका से अवेल करि परिबे तुमको केही मना करि परिबोनी तमे को भी रिलीजन फॉलो करले जदि गवर्नमेंट रखिबो तमे कोर्ट को डायरेक्टली जाई परिबो माने इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रे से नु एटा तुमको पार्ट 4 रे मिलिबो बट नोवेल फीचर बट एनफोर्सेबल बाय लॉ एटा तीनटा कैटेगरी रे हिची सोशलिस्टिक गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल जहाँ कहली फंडामेंटल राइट्स का नॉन द डायरेक्टिव्स आर नॉन justiciable not enforceable by the courts eta seitpai am constitution कहला eta the principles these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be duty of the state to apply these principles in making laws
एटा को हम रेफर करके लॉ मेकर करिया बट या दरे जा लिखा है तुम जदि न फॉलो हैला तल तुम कोर्ट को जाई परिबो एटा नोवेल फीचर बट मैंडेटरी फीचर नहीं तापर जेमति कहली हम फीचर रे अछि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट गोटे कंट्री तीन प्रकार ही परिबो नो रिलीजन थियोक्रेटिक रिलीजन माने गोटे रिलीजन सुपीरियर हो जेमति पाकिस्तान रे इस्लाम और हमर सेकुलर माने समस्त राइट अछि से किछि भी फॉलो करि परिबे सेटा लिखा है एठी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर ए सेकुलर स्टेट it does not uphold any particular religion as the official religion of the Indian state. The Indian constitution embodies the positive concept of secularism, giving equal respect to all religions or protecting all religions equally. तार किछि धर्म नहीं और सब धर्म अछि माने सब रिलीजन ता आखे आगे इक्वल सेटा को सेकुलर स्टेट कहंतु आउ हमर वोटिंग राइट ता हला 18 वर्ष जोटा आगु 21 वर्ष थिला जोटा चेंज हला 1989 21 years to 18 years 61st constitutional amendment act 1988 amendment बहुत गुडे दरकार बट केते गुडे बहुत इंपोर्टेंट हला 42 44 72 73 42 टा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहନ୍ତି एटा में प्रियम्बल टिके पढिबा बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे भी एवडा पढिबा हमर सिंगल सिटीजनशिप पूर्व जमती कहली जे स्टेट पे गोटे सेंटर पे गोटे दरकार नहीं तमे जो भी स्टेट रे जन्म हेले इंडिया रे हरियाणा रे जन्म हेले जा ओडिसा रे जन्म हेले से they are born or reside in the same political and civil rights of citizenship over all the country and no discrimination is made between them आम कंट्री रे केतटा इंडिपेंडेंट बॉडीज अछि जेमति इलेक्शन कमिशन जे सो इंडिया सारा इलेक्शन कराए आम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेंटर ऑफ स्टेट रे जते पैसा खर्च हैला से ऑडिट करके देखेबो जे गैप कोठी अछि को पैसा रे हिसाब मिलबी यूपीएससी जो ऑल इंडिया सर्विस एग्जामिनेशन करे एडवाइस करे प्रेसिडेंट को डिसिप्लिनरी मैटर्स रे आमे जोटी पाई पढुचे स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन ओपीएससी जो एग्जाम टा स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन कराए एटा इंडिपेंडेंट बॉडीज आम कंट्री रे केते गुडा इमरजेंसी प्रोविजन अछि इमरजेंसी प्रोविजन तीन प्रकार रे अछि जेतोळे प्रेसिडेंट लगै परिबे एटा तीन प्रकार अछि गोटेला नेशनल गोटेला स्टेट गोटेला फाइनेंशियल यदि बाहरु वार हैला कि एक्सटर्नल एग्रेशन हैला आर्टिकल 352 अनुसार हम नेशनल इमरजेंसी लगै परिबा स्टेट इमरजेंसी सेमति तार कॉन्स्टिट्यूशनली मेशिनरी यदि स्टेट चीफ मिनिस्टर को गोटे कथा कुआ जीवो कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार से फॉलो न करा करिवो ताहाले प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 लगै परिबे और सेंटर रो कथा यदि न सुनला ताहाले आर्टिकल 365 लगै परिबे कॉन्स्टिट्यूशन सुनिबोनी जदि कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार प्रोग्रेस करिबन दर एमपी कलकत्ता रे हैला जोटी हम गवर्नर गैजेट बाहर करी कि ताको चीफ मिनिस्टर को बाहर कर देले जदि गवर्नर न करतांते प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स फेल हवा ये रे आर्टिकल 356 लगे पारता एनी ऑफ द व्हिच लगे पारता डायरेक्शन ऑफ द सेंटर भी जदि से न सुनतांते को भी कंडीशन में स्टेट इमरजेंसी लागि परियो फाइनेंशियल इमरजेंसी कोन यदि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम कंट्री रो खराब हेजिवो ताले आर्टिकल 360 अनुसार प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे परियो तापर हमरो 3 टायर गवर्नमेंट हमें तो सुनतिले फेडरल स्ट्रक्चर माने सेंटर आउ स्टेट बट for a 73 or 74 constitutional amendment 1992 रे 3 टायर ऐड हेगला ता माने कोन गां गहळ रे पंचायत रूरल लेवल इलेक्शन हबो बाटिके पार्ट नुआ पार्ट ऐड हेला 9 और न्यू शेड्यूल ऐड हेला 11 ते आम भुवनेश्वर बढ़िया जगह रे म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन हबो मेयर हबो जहां लोकल गवर्नमेंट रे जहां जा अछि कॉर्पोरेटर मेयर जोडा सब पार्ट 9 है और शेड्यूल 12 ऐड हैला जे तो हमरो जदि पचरा जीवो मोस्टली 2 टायर बट 1992 पर हमरो 3 टायर गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ऐड हैला 97 अमेंडमेंट एक्ट रे 2011 दैट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी हमें फॉर्म कर परिबा अमूल हो हमरो ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो
एटा सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज रे आसो तापर हला हमर जतले कॉन्स्टिट्यूशन हला क्रिटिसिज्म कोन हला जे एटा बरो कॉन्स्टिट्यूशन से माने एक्सप्लेनेशन कोन देले डिबंकिंग माने एक्सप्लेनेशन हमर दो बरोड हिची 60 टा कंट्री रो बट आमे आम कंडीशन अनुसार सेटा को फिट करै तांकर जहा अछि आज इट इज लिखि दे जेमति कहली बहुत जगह रु आसी छि किंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ना 90% कि 60-70% आसी छि बट पूरा कॉपी नुह सेतबेले इंडिपेंडेंस अनुसार जहा चेंज दरकार थिला आमे ऐड करिछु आ परे विथ टाइम एटा को अमेंड भी करा जाइछि एटा एंटी इंडियन बट से माने एक्सप्लेन दिले जे ना इंडियन वैल्यूज तो मॉडिफाई हेछि इंडियन वैल्यूज को ऐड करिकि से माने कॉन्स्टिट्यूशन करिछन ऑन गांधीयन से कहले ना गांधीयन कर केते बडा प्रिंसिपल रखा जाइछि बोथ इन फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रे अछि पूरा ऑन गांधीयन बहुत बड़ जेंति से कहले बहुत बड़ काहे इंडिया रो डाइवर्सिटी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स लॉ पूरा क्लियरली स्टेट करिया पे सेटा बड़ होइछि पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स माने से कहले खाली लॉयर माने करी के एटा तांको अनुसार करछथि बट तमे जति एनफोर्स करिया को चाहछो किछि रूल एंड रेगुलेशन पनिश करिया को चाहछो देन इट हैज टू बी लेंदी क्लैरिटी सहित और एनफोर्सेबल हे परिबा दरकार बुझी परलो तो आज क्लास एति कार किछि डाउट अछि अछि हेडफोन हां कार किछि डाउट अछि हां ठीक अछि जे काजू काजू अछि ता नाटा कोन भलो नाटा क्लास रे जे काजू काजू ही अछि लॉगिन करछथि ता नाटा कोन ठीक अछि